अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास 24 वोल्ट 5 एम्पेयर का पावर अडाप्टर है जो कि काम नहीं कर रहा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। पावर अप्लाई करूँगा सीरीज लैंप के थ्रू। Lamp is not drawing power and there is no indication. DC voltage, आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है। जब इसका हम कवर रिमूव कर लेते हैं तो कभी भी किसी कंपोनेंट को आपने टच नहीं करना जब तक हम इससे तसल्ली ना कर लें कि इसके ऊपर किसी किस्म के कोई वोल्टेज नहीं है। हत्ता कि अगर हमने इसको पावर सप्लाई से हटाया हुआ है, लाइन वोल्टेज से हटाया हुआ है, तो बाज़ औक़ात इसके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो भी चार्ज होल्ड किए हुए होते हैं, तो वो भी नुकसान कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी शील्डिंग दोनों साइड से हटा दी है। अभी सबसे पहले हम इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज, और इसके पॉइंट बनते हैं यहाँ पर ये वाले, तो ये ज़ीरो है। अगर यहाँ पर वोल्टेज हो तो उसको हम डिस्चार्जिंग किट से, किसी लैंप से, काविये से डिस्चार्ज करेंगे। सबसे पहले सर्किट की अच्छे से इंस्पेक्शन कर लें। सबसे पहले तो इसका ये फ्यूज़ चेक कर लेंगे। इसका फ्यूज़ डैमेज है। यहाँ पर ये TEA1751 IC इस्तेमाल हो रही है। इसमें ये PFC कंट्रोलर है और फ्लाईबैक कन्वर्टर है। यहाँ पर देखें तो ये रजिस्टर एक 10 ओम की डिसकलर्ड है। ये तो देखें तो इनका कलर ठीक है, इसका कलर चेंज है। इसको हम चेक करेंगे। ये पाथ देखें तो ये किस पाथ में आ रही है। यहाँ से ये 12 नंबर पिन से, जो कि PFC ड्राइव है, यहाँ से होके इस रजिस्टर के नीचे से होने के बाद यहाँ पर डायोड और ये रजिस्टर जो कि गेट के लिए है, ये इस मॉसफेट पे आ रही है। अभी हम इसकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो
ये रेजिस्टेंस देखें तो ये ओपन शो कर रही है, यहाँ पे 76 ohms है। तो ये जब रजिस्टर ओपन हो जाती है तो ये इस तरह शो कर रही है। देखें ये इसकी ये कंडीशन हुई हुई है। Scratched it, it is now changing the resistance. It is 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. We need to replace this resistor.
अभी अगर इस लाइन को ट्रेस बैक किया जाए तो ये आती है इस मॉसफेट पे। हमारी ये मॉसफेट डैमेज है जो कि पीएफसी सेक्शन में है। इसको भी रिप्लेस करते हैं। इसकी वजह से डीसी रेल पे शॉर्ट सर्किट आएगा। अभी ये जो शॉर्ट सर्किट इसका यहाँ पे आ रहा है, इसको अगर हम इस जगह पे देखेंगे, इसको ब्लैक लीड अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएं तो हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी दोनों लीड्स लगाते हैं तो एसी इनपुट टर्मिनल पे इंडिकेशन आती है। इसका मतलब है कि डीसी रेल में शॉर्ट सर्किट है, जंपर हुआ है। अभी मॉसफेट को रिप्लेस कर लेते हैं। K15A50D अभी मैंने ये रजिस्टर, मॉसफेट और फ्यूज़ रिप्लेस किया। ये मॉसफेट की शॉर्ट सर्किट भी ख़त्म हो गई। डीसी रेल पे शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो गया। फ्यूज़ हमारा क्लियर हो गया। चलिए इसको भी पावर अप्लाई करते हैं। अभी देखिए लैंप एक दफ़ा ऑन हुआ, उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे चला गया, तो इसका मतलब ये है कि इसने इनपुट करंट ली है। अभी यहाँ पर देखें 24 वोल्ट आउटपुट आ चुकी है। अभी इसकी ये एलईडी भी ऑन है। आउटपुट 24 वोल्ट होनी चाहिए, तो 24.33 है, तो दैट्स गुड। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।